Lok Sabha witnessed sharp verbal exchanges during the ongoing budget session after the leader of opposition Rahul Gandhi attempted to quote from a magazine article carrying excerpts from the unpublished memoir of former Army Chief General M.M. Naravne. Rahul Gandhi made the remarks while responding during the motion of thanks on the President's address. He said he was quoting from former Army Chief Naravne's memoir while raising the issue in Lok Sabha. He claimed ex-Army Chief had written about both the Prime Minister and the Defence Minister and referred to reports of Chinese tanks allegedly positioned just a few kilometers from the Kailash range during the standoff. Rahul Gandhi also accused the government of blocking the memoir's publication. Let's take a look at some key moments from that fiery showdown in Lok Sabha. Speaker sir, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक के उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Gadda Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। Well, you just heard the fiery showdown which happened inside the House today. Despite objections and adjournments, not once but thrice Rahul Gandhi insisted that the document he was referring to was authentic and that he was well within his rights to quote from it. Soon after, Rahul Gandhi's sister and MP Priyanka Gandhi also stood by him, citing that Rahul has not flouted any rules. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। It's a matter of national security. These are the words of Army Chief, serious leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed
to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. ये गलत बात है. जो रूल है पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो. ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है. वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? The BJP launched a sharp attack on Rahul Gandhi, demanding an immediate apology for his conduct in the Lok Sabha. Party leaders have called for strict action against the leader of opposition, accusing him of misusing his position and violating parliamentary norms. राहुल गांधी जी बचकाना हरकत कर रहे थे, सदन की गर्मा को तार तार कर रहे थे. लग रहा था कि कोई एक ऐसा बच्चा आ गया है जो सब चीज को छोड़ करके अपनी बात कहता हो. और राहुल गांधी को अगर बोलना ही था तो ये बताते कि चाइनीज एम्बेसी में उनकी क्या बातें हुई थी. क्या उन्होंने कहा? राहुल गांधी को बोलना ही था तो बोलते कि नाना के समय कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन लिया गया. वहां से शुरू करना चाहिए था अगर भारत के एक सच्चा व्यक्ति होते तो. वो टैंक लेकर के आने का जो बात कर रहे थे चाइना बॉर्डर में, वो किताब मैगजीन बात करके वो भारत को कमजोर दिखाने के लिए अपना एक षड्यंत्र रचा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं होगा. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 1 इंच सरेंडर नहीं कर सकता है. और कांग्रेस को उस जमाने में 50-60 साल पहले जो जमीन चीन के कब्जे में दिए थे वो वापस लाओ, नहीं तो आप वो हमारा बीता हुआ कल तो लौटा नहीं सकता है, तो कम से कम माफी तो मांगो. Meanwhile, INDI bloc has rallied behind Rahul Gandhi, with the Congress accusing government of trying to muzzle the opposition. Party leaders claim that Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh appeared rattled the moment General Naravne's name was mentioned. The Trinamool Congress also weighed in, alleging that democracy is being undermined in Lok Sabha. The autobiography of General M.M. Naravane, 4 Stars to Destiny, seems to upset the government greatly. Obviously, there are some very inconvenient truths in the book, which the government does not want the nation to know about. But while they can throttle the voice of the opposition within the House, the truth of what General Naravane has written will come out. And if they feel so strongly that what the former army chief has done is erroneous, they must proceed against the army chief under the military code. 2 रूल बात कर रहे हैं. एक रूल का आधा पढ़ते हैं, वेणुगोपाल जी ने उसी रूल का सेकंड पार्ट पढ़ा. पूरी रूल का पढ़ाना चाहिए. सरकार आधा रूल पढ़ के आधा विपक्ष का ऊपर दबाना चाह रही है. हम एक ही चीज बोल रहे हैं, देशभक्त नरवणे जी एक इंडिया का आर्मी जनरल थे. अभी सरकार का, मोदी सरकार का टाइम पे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर थे. उसी टाइम पे वो रिटायर्ड हुए थे. उनका एक बुक हुआ है, वो बुक बाहर नहीं आई है, बट उस बुक का बारे में चर्चा है. पूरा बुक में पब्लिश हुआ है, कैरावान मैगजीन में छपा है. उसका बारे में, मेमोरियल का बारे में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है. वो नरवाने का नाम लेने के बाद क्यों कूद पड़ रहे हैं राजनाथ सिंह जी, क्यों कूद पड़ रहे हैं अमित शाह जी, क्यों कूद पड़ रहे हैं किरण रिजिजू जी, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं. And before we go across to our guests and open up this debate, it's important to also listen into what the former Army Chief General M.M. Naravne had to say about the months-long standoff with China in eastern Ladakh region. Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was of course the disengagement which I've just talked about. So future rounds of talks will continue. And I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides and
Only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. All right, let's open this up. We have Charu Pragya, spokesperson, Bharatiya Janata Party, Dr. Akashdeep Muni, political analyst. Good evening to both of you. Charu Pragya, I want to come to you first. Rahul Gandhi made some big sensational allegations and charges quoting from an unpublished book. And then Rahul Gandhi also went on to say, as the house was adjourned, कि सरकार भाग गई, that the government is scared, घबरा गए हैं. Swati, it is laughable, actually, the kind of statements that Rahul Gandhi has been making outside Parliament. But first, let's begin with the kind of statements Rahul Gandhi was making today in Parliament. Today, the discussion was a motion of thanks to our Honorable President's vision for the nation. Why did Rahul Gandhi feel so compelled to drag China into this discussion? Not did he just drag China into the discussion, he did it on the basis of a book which does not exist. A book which doesn't exist has been quoted by a publication. Does that quote even count? So, today, if I were to say that I'm going to quote a book which will be published sometime in the future, it just does not count. So look at the link that they're trying to make. It would have been laughable had it not been a concentrated effort made by the Congress party time and time again to undermine our nation, undermine our army, undermine everything which brings pride to an average Indian. And this he's trying to quote General Naravne, who's openly and multiple times said that not an inch. All right, Charu, your 60 seconds are over. I want to take a counter from Dr. Akashdeep Muni on that. Dr. Muni, and I'm not even getting into Rahul Gandhi saying that this is authentic. He says it is guaranteed authentic. This is a very simple question I'm asking. We heard Mr. Naravne, former army chief, say that not an inch was lost. So if Rahul Gandhi goes on to cite an unpublished memoir in the court, that's the kind of trust that Rahul Gandhi has in those excerpts. Will Rahul Gandhi and the Congress party today also agree with General Naravne when back then he said not an inch lost? Your 60 seconds start now. Let's first understand that what Rahul Gandhi is saying. August 2020, Chinese tanks advancing towards Indian positions in Rechingla, where Naravne sought urgent directives from the Defense Minister Rajnath Singh. The lack of immediate clear responses showed political indecisiveness related to Chinese incursion. Naravne makes frantic calls to Rajnath Singh, Ajit Doval, Bipin Rawat and S. Jaishankar, repeatedly asking where are my orders, and no clear directive is given. And this is what Rahul Gandhi today spoke about. An expert from Chief of Army Staff General Naravne's unpublished memoir, 4 Stars of Destiny, which is unpublished as Ministry of Defense has not published it under review since last 2 years. First, the Defense Ministry does not give permission for publication, and then asks the leader of opposition that is it published, and if not, you cannot speak about it. Just imagine, Chief of Army Staff has stopped from expressing the same LOP wanted to say. He is again stopped from expressing, and his mic is switched off. Is this democracy? Okay, your time is up. Now let me open this for both of you. Quick rebuttal coming in from Charu Pragya. You're not allowing the leader of opposition in Lok Sabha to speak. You first said don't cite from an unpublished memoir, and then you're saying don't cite from a magazine, don't even talk about India, China. He says he's talking about national security, Charu. Swati, if the book doesn't exist, how can a magazine quote it? And if a book doesn't exist, how can you use that as a source of your information in the temple of democracy? Think about it. This is what Rahul Gandhi is doing. And what is more important, the words from the horse's mouth from General Naravne himself, which you just played out now. And he clearly said we gave a befitting reply to China. He clearly said not an inch of our land was lost. And he said that China was forced to disengage. Words from our army general himself. Is that more important, or is Rahul Gandhi's unverified, unpublished, so-called source more important? They have a habit of just disrupting Parliament. Dr. Muni, please respond to that. That, in fact, was my first question to you, which you very conveniently sidestepped. If you are today citing an unpublished book, will you also not agree with what General Naravne said in his interviews, that not an inch was lost? See, what the book says, what the expert excerpts in the book says. It says that on August 2020, Chinese incursions were
happening, and for 2 hours, our government was indecisive. They knew nothing what to do. And it's not about that कि ना कि इतना जगह ले लिया चाइना ने. It's about कि ना कि indecisive. ये तो आपके लिए तो नैरेटिव वही था ना कि चाइना इतनी जगह लेके बैठा है हमारी टेरिटरी में. ये तो नैरेटिव है कि नहीं है ऑपोजिशन का? राहुल गांधी का ये बयान है कि नहीं है? ये नैरेटिव मैं नहीं बोल रहा. नहीं, मैं आपसे कह ही नहीं रही हूँ कि आप कह रहे हैं. मैं कह रही हूँ कि ये नैरेटिव राहुल गांधी का है कि नहीं है. कई बार वो ये बयान दे चुके हैं कि नहीं दे चुके हैं? मुझे बताइए कि नहीं. हाँ, ये सच बात तो है. फिर MM नराव ने, फॉर्मर आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि नॉट एन इंच वाज लॉस्ट. तो आप उस पर भी विश्वास करेंगे क्या? और फिर जिस अनपब्लिश्ड मेमोआ की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उसमें यह भी कहा गया कि उनको यह ऑर्डर मिला कि जो आपको उचित लगता है वो कीजिए. पूरी फ्रीडम दी गई, आजादी दी गई डिसाइड करने के लिए. ये भी एक आर्ग्यूमेंट है. मुझे आप एक बात बताइए कि ना कि वो बुक पब्लिश करने से सरकार नारावने जी को रोक क्यों रही है? ये नारावने जी ने बोला है. हाँ. कि उनको रोका गया है 2 साल से. अच्छा. पेंगुइन वाज टू पब्लिश इट. कोट अनकोट है, आपको कोट चला सकते हैं अपने चैनल पे कि उनको रोका गया. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों रोका गया है, क्यों रोका जा रहा है? और रोकने के बाद आप क्या बोल रहे हो कि नहीं कि वो पब्लिश नहीं हुआ तो आप बोल भी नहीं सकते. भाई वो एक मैगजीन में पब्लिश हुआ. लेट द एलओपी कोट द मैगजीन. चारू रिस्पॉन्ड. बुक को पब्लिश भी नहीं होने दिया जा रहा है. इट्स नॉट बीइंग अलाउड टू बी पब्लिश्ड. Listen to this. Parliament में झूठ बोलना perjury है. It is a punishable offense, right? You cannot lie in Parliament. If a statement is made like that, it is expunged from Parliament. So again, I'm asking you this: if your concern is publishing the book, talk about that. But how can you quote and call that quote verified when the book does not even exist? See, the point is this misleading is not coincidental. This misleading is also not a one-time thing. All right. Charu Pragya, the BJP, yes, Charu Pragya, the BJP, of course, they say that Rahul Gandhi is misleading. Rahul Gandhi, on the other hand, his counter charges that Sarkar घबरा गई है, that the government does not want to answer these questions. इसमें ऐसा क्या है इस book में that it's not being allowed to be published? Those, of course, are charges being leveled by Rahul Gandhi. Thank you very much, Charu, and Dr. Muni for joining us. Moving on, Pakistan